So in this question we are given let w is equals to root 3 plus I by 2 and p equals to w times n where n is 1, 2, 3. For the h1 z belongs to complex real z greater than half और h2 दिया है z belongs to complex real z less than minus half. C set of complex number पता है और z1 p intersection h1 z2 p intersection h2 o represents origin. हमें बेसिकली z1 o z2 एंगल चाहिए. तो व्हाट वी आर गिवन पहले लिख लेते हैं. हमें दिया है w इक्वल्स टू रूट 3 प्लस आई बाई 2. इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6. इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर आई पाई बाई 6. ठीक है. p हमको दिया है, p दिया है w टाइम्स n, w टू द पावर n दिया है, जहाँ पे n इज 1, 2, 3. तो p आ जाएगा अपना e टू द पावर आई पाई बाई 6 पावर n विच इज e टू द पावर आई n पाई बाई 6 और मॉड्यूलस ऑफ p 1 आ जाएगा. ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या मिल रहा है, ये और ये दो जो एक्सप्रेशन दिया है इससे हमें मिल रहा है कि p lies on a circle जिसका रेडियस इज 1 and points lie at a difference of pi by 6 angles. If we try to draw the circle, the circle will be this is O, this is 1, 0 and this is minus 1, 0 and the points will be basically like this. And so on. I'm only drawing these points. The angles between them will be pi by 6, pi by 6 and pi by 6 like this. So now we are given h1. What is h1? h1 is z belongs to complex number real z is greater than half and h2 क्या दिया है, h2 दिया है real z is less than minus half. So if we draw them on this circle, this is x equals to minus half and this is x equals to half. So for z1 cos n pi by 6 we got from p, ये अपना हाफ से बड़ा होगा तो पॉसिबल हो सकते हैं ये वाला, ये पॉइंट हो सकता है पॉसिबल, वैसे ये पॉइंट हो सकता है पॉसिबल. सिमिलरली एक और लाइन इधर हो सकते हैं पॉसिबल. इसको मैं ए बी एंड सी पॉइंट्स नाम दे रहा हूँ. दिस कैन बी द पॉसिबल पॉइंट्स फॉर z1. सिमिलरली फॉर z2 cos n pi by 6 is less than minus half. So the points can be this point, it can be this point and it can be this point. This is C, D and E. So if you look carefully, angle Z1 O Z2, this angle can be our 2 pi by 3, it can be 5 pi by 6, pi, 7 pi by 6 and 4 pi by 3. These are the possible angles. Now deep dive into the options, we can see that it is there 2 pi by 3 and 5 pi by 6. So the correct answers to this question is option C and option D.